Good morning, friends. Once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Just a minute. Sir, please take 10 standard 10 है ना, तो 10 के 10 भी दोनों में डालिएगा। कितने 3 चैप्टर आ रहे हैं ना आपके फ्रॉम सिलेबस 3 आर कमिंग ना 4 4 Yes, Sandhya. Is the sound okay right now? They have commented low sound. Is the sound okay right now? Sandhya? Is it okay? Sir, switch off the fans. Is it okay, beta? Now, is the sound okay? अरे यार, बेटा I can't understand why is it happening. Okay, ठीक है, चलिए है ना. So just again, it is around 5 to 6 minutes late, है ना? Because as soon as I switch on the system, it again went on the restarting mode. Okay, तो repairing mode में कभी-कभी जा रहा है. चलिए. So we have done lot of revision in chapter 4 agriculture. Okay, today we are starting with the revision of chapter 5 industries. Okay, so industry is basically what? The secondary economic activity. ठीक है, we are considering it as a secondary economic activity. ठीक है, so what is secondary activity or manufacturing? ठीक है, so secondary activities or manufacturing change raw materials into product of more values to people. ठीक है, so what the secondary activity or manufacturing do? ठीक है, so secondary activities. Okay beta, now secondary activities are also called as manufacturing. Secondary activities are also called as manufacturing. Okay, so secondary activities or manufacturing. Secondary activities or manufacturing, what they do? Change raw material okay, so secondary activities or manufacturing change raw materials into products of more value to people. ठीक है, so what are secondary activities? ठीक है बेटा, so secondary activities
को और क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ओके, सो यदि हम थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्राइमरी एक्टिविटी, देन secondary activity and tertiary activity. Okay, so the secondary activity can also be termed or called as what, manufacturing industries. ठीक है, secondary activity को और क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। Got it beta? Okay, so there is an example given about the making of paper. ठीक है, so pulp was changed into paper and then paper was changed into notebook. So these represent the two stages of manufacturing process. ठीक है, so the paper made from pulp and the cloth made from cotton have value added to them at each stage of the manufacturing process. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसके हर एक स्टेज पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर एक स्टेज पर क्या होगा, उसमें वैल्यू एडिशन होता चला जाएगा। गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट? ओके, सो इट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम। ठीक है, then next is about what, industry. Okay, so what is industry? What is industry? So industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of mineral or the provision of services. ठीक है, so industry refers to an economic activity. Industry refers to an economic activity, okay, that is concerned with, okay, so industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, okay, then extraction of minerals, and next is what, the provision of services. Okay, provision of services. Okay, so what is the definition for the term industry? Okay, industry term के लिए क्या definition है? So industry refers to an economic activity. ठीक है, industry एक economic activity है। अब इसमें क्या होगा, production of goods। ठीक है, अब आप याद करें जब हमने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, एग्रीकल्चर वाला। तो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, we discuss about the three type of economic activities: primary activity, secondary activity and tertiary activity. ठीक है, अब हम कौन सी टर्म पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री एक ऐसी टर्म है जिसमें वो तीनों एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं, यानी द प्राइमरी एक्टिविटी कैन आल्सो बी एन इंडस्ट्री, सेकेंडरी एक्टिविटी भी क्या होगी, इंडस्ट्री होगी, और टर्शियरी एक्टिविटी भी क्या होगी, इंडस्ट्री होगी। गॉट इट? तो वो जो हमने पढ़ा था ना,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, वो तीनों ही किसमें इंक्लूड हैं? इंडस्ट्री में। ठीक है, जैसे जब हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, फिर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। क्या बात करें? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कौन सा हो जाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल क्या बनेगा बेटा? इट इज ए प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और जब हम किसकी बात करेंगे? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की, तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या हो जाएगा? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, गॉट इट? सो वो जो हमने पढ़ा था ना कि 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो इंडस्ट्री में तीनों सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड है मतलब क्या आ गया? सेकेंडरी सेक्टर आ गया। व्हेन इंडस्ट्री कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल है तो क्या आ गया? प्राइमरी सेक्टर। जब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है तो क्या आ गया? टर्शियरी सेक्टर। गॉट? ओके, सो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, है ना? इफ ही कुड बी आस्क्ड विद ए क्वेश्चन यदि पूछा व्हाट इज एन इंडस्ट्री, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट इज एन इंडस्ट्री, तो व्हाट इज एन इंडस्ट्री है तो क्या बोलेंगे हम? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इतनी बात आई समझ में? ओके, चलिए, गॉट इट? सो वी हैव द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जब हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कोल माइनिंग की बात करें, लाइमस्टोन माइनिंग हो रहा है, तो व्हाट आर वी डूइंग? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जब हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, टीचिंग की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स आर क्यूरिंग द डिजीजेस, सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ओके, so everything falls under the industry। ठीक है, चलिए, so जो next topic we are going to discuss is about the classification of industries। Classification of इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है बेटा? द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ द इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। ठीक है, हमें जो सिलेबस में है, सो क्लासिफिकेशन कितने बेसिस पर है? 3 बेसिस। हाउ मेनी बेसिस आर देयर? 3 बेसिस। ठीक है, सो द फर्स्ट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन, the first basis for the classification that we are now going to discuss is what? On the basis
basis of raw materials. Okay, classification of industries on the basis of raw materials. ठीक है, so raw materials के बेस पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, so industries can be classified on the basis of raw material. ठीक है, तो जो पहला क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का है वो किसके बेस पर बेटा हम डिस्कस करेंगे, रॉ मटेरियल. ठीक है, जस्ट अ मिनट. The students are coming from physical classes also today, so simultaneously we have to conduct. So you have to teach the students sitting there, at the same time you have to. Okay. Yes. And they might have not bring the economics textbook or material. No problem, no problem. So only जो important questions होते हैं उनका डिस्कस करके कि मनी एंड क्रेडिट है तो इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं, हाउ टू राइट द आंसर, दैट मच. Okay, so beta the first is on the basis of raw materials. ठीक है, कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो जो इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल कहां से यूज होगा. ठीक ना, अभी मैं डेफिनेशन वगैरह लिख रहा हूं उससे पहले ध्यान देना. ठीक है, आई विल राइट द डेफिनेशंस ऑफ द क्लासिफिकेशन इन अ वेरी शॉर्ट. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हम पहले भी ऑनलाइन बहुत अच्छे से कर चुके हैं. यू माइट हैव रिटन द डेफिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. ठीक है, सो यहां मैं क्योंकि बोर्ड पे स्पेस भी कम है तो पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा. ठीक है, द लॉन्ग डेफिनेशंस आर ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, तो जब एग्जामिनेशन के पर्पस से याद करोगे तो ये सारा आप डेफिनेशंस आपकी नोटबुक में से या फिर टेक्स्ट बुक में से लर्न करोगे. ठीक है, मेरे पास बोर्ड छोटा है, पूरा लिखना है, सो आई विल राइट इन ए शॉर्ट. ठीक, सो व्हाट इज द फर्स्ट बेसिस, द इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, so if we are going to classify the industry on the basis of raw material, so what is the first classification? Okay, so the first classification is agro based industries. What is the first classification? The first classification is agro-based industries. Okay, so what are the agro-based industries? They use plant and animal-based product as a raw material. Okay, so what are agro-based industries? It uses plant and animal-based product. It uses plant and animal-based products. Okay, it uses plant and animal-based product as a raw material. Okay, so what are agro-based industries? So agro-based industries uses plant and animal-based product. Agro-based industries uses plant and animal-based product as a raw material. ठीक है, तो इसमें रॉ मटेरियल या तो प्लांट्स से आएगा. ठीक, अब इसमें भी ध्यान रखना प्लांट कौन से, जो फार्मर्स खेतों में उगाता है, क्योंकि अभी हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जैसे फर्नीचर मेकिंग है तो वो भी अल्टीमेटली प्लांट है. तो यहाँ प्लांट का बेसिकली सेंस क्या है, दैट द फार्मर ग्रो
in agriculture. ठीक है, so that is what the plant based product, likewise what the animal based product. ठीक है, so वो किस में आएगा, agro based industries. okay, what may be the example, food processing. अब फूड प्रोसेसिंग कौन सा बेटा, जैसे मान लो हम फूड प्रोसेसिंग में बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, ब्रेड बन रही है, गॉट इट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया. ठीक है, वेजिटेबल ऑयल बनता है, डालडा वगैरह खाते हैं ना, फिर कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेदर इंडस्ट्री है. ओके, शू बन रहे हैं ना, लेदर के शूज बनते हैं, तो ये सब किस में आएगा, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. गॉट इट बेटा. देन मिनरल बेस्ड industries. okay, what is it, mineral based industries. okay beta, so what is the next classification, what is the next classification beta, mineral based industries, है ना बच्चों. so what are mineral based industries, what are mineral based industries. okay, so these are primary industries. These are primary industry, these are primary industry. okay, better I will write here, है ना, sorry. so these are primary industry which uses. okay, so what are mineral based industries, these are primary industries which uses mineral ores, which uses mineral ores. so what are they using, मिनिरल ओर्स. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का ओर होता है, आयरन का ओर होता है. ओके, तो दे यूजेस मिनिरल ओर्स एज रॉ मटेरियल. ठीक है, सो मिनिरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी बेटा, मिनिरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो मिनिरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूजेस मिनिरल ओर्स. ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या यूज होगा, मिनरल ओर्स. अब बेटा मिनरल ओर्स क्या होता है, जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट. सो इन आयरन एंड स्टील प्लांट व्हाट आर दे यूजिंग, मिनरल ओर. विच मिनरल ओर बेटा, आयरन ओर. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स है ना, तो हमारा जो मराठा सीमेंट वर्क है, अंबुजा सीमेंट प्लांट है, मानिकगढ़ है, एलएनटी है. ठीक है, तो ये जो है, ये प्लांट्स क्या यूज कर रहे हैं, मिनरल्स ओर यूज कर रहे हैं. विच मिनरल ओर आर दे यूजिंग, दे आर यूजिंग लाइमस्टोन. व्हाट आर दे यूजिंग, व्हाट आर दे यूजिंग, दे आर यूजिंग लाइमस्टोन. गॉट इट बेटा. चलिए, so mineral based industries, these are primary industry which uses mineral ores as raw material. ये क्या करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल किसका यूज करते हैं, मिनरल ओर का यूज करते हैं. ठीक है, so these are what the mineral based industries. ठीक है, चलिए. Then what is the third we are having, marine based industries. okay, the third classification that we are having is what, marine based industries. okay, so what they do, it uses products, it uses products
obtained from, it uses products obtained from sea or ocean. Water marine based industries, it uses products obtained from sea and ocean. Okay, so water marine based industries, it uses product obtained from sea and ocean. ठीक है, it uses product obtained from sea and ocean as a raw material. Okay, so water marine based industries beta, so it uses products obtained from sea and ocean as a raw material. तो समुद्र में से या ओशन में से, है ना, सी और ओशन में से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो इस इंडस्ट्री में क्या यूज होंगे, एज ए रॉ मटेरियल. ठीक है, so it uses products obtained from sea and ocean as a raw material. Got it beta? That समझ में आया? And the last one, the D, is what? Forest based industries. Okay. What is the fourth classification? Forest based industries. Okay. So what are forest based industries? It uses, what are forest based industries beta? So it uses, just a minute, so it uses forest products. It uses forest products as a, okay, it uses forest product as a raw material. ठीक है, so जंगल से निकलने वाला, फॉरेस्ट से जो भी रॉ मटेरियल क्या करते हैं, लेकर के आते हैं. ठीक है, that is what the forest based industries. ठीक है, so what may be the example? Pulp and paper. Paper manufacturing होता है ना, हम बलारशा जाते हैं ना बेटा, so we come across paper industry. Okay, so वो जो इंडस्ट्री है बल्लारशाह में, वो हम क्या कह सकते हैं, that is what the forest based industry. Okay, then pharmaceuticals means दवाइयां बनाना. तो बहुत सारी दवाइयां बनाने की जो इंडस्ट्री है, they are using which beta? They are using products obtained from forest. Okay, then furniture making. Okay, and sometimes the construction of building. Okay, because number of products which are obtained from forest are also used in the construction of building. Yes, I am talking about BILT industry. Got it? So ये हो गया हमारा क्या, classification of industry on the basis of raw material. ठीक है, आप ध्यान देना, you could be asked with a question. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना. यदि एग्जाम में आया कि बेटा ये सर हमने पढ़ा टॉपिक, अब इसमें से क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे, है ना, व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटी. यदि 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो क्या हो सकता है, यहाँ तो 4 पॉइंट है, यहाँ कितने हैं, 4 पॉइंट. अब 4 पॉइंट है तो फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे होगा. तो आपको हो सकता है कि ये 4 चीजें पूछें और एक आध एडिशनल क्वेश्चन इसके साथ हो. जैसे आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज एन इंडस्ट्री, व्हाट इज एन इंडस्ट्री,
उसी के साथ एक क्वेश्चन एडिशनल में हो गया, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। तो अब क्या हो गया, व्हाट इज एन इंडस्ट्री एक नंबर का हो गया, और क्योंकि इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, वो कितने मार्क का हो गया, 4 मार्क का। ऐसे करके आपके कितने मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, 5। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसी क्वेश्चन को 3 नंबर में पूछा, ठीक है, पर यहां कितने पॉइंट हैं, 4। क्वेश्चन हल्का सा बदल देंगे, एक्सप्लेन द क्लासिक एनी 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपको तो सिलेबस में है 4 और मैंने कितना पूछ लिया, एनी 3, तो फिर आपको ये 4 में से कोई भी 3 लिखना है। So question can be converted into, the question can be converted into 5 mark, it can be converted into 3 mark question। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना और लर्न कर लेना। ठीक, चलो अब ये वाला क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। सो द नेक्स्ट थिंग है ना, अगेन अभी तो क्लासिफिकेशन 2 और बाकी हैं। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया वो कैसा डिस्कस किया, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा, बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज। तो अभी जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। द सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर है, साइज के बेस पे। ठीक है, so on the basis of size industries can be classified as small scale industry, it can be classified as small scale industry and large scale industry. Industries can be classified on the basis of size as small scale industry or large scale industry। ठीक है, अब इसमें मेन चीज क्या है, ठीक है, सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, सो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, it uses lesser amount of capital। ठीक है, it uses lesser amount of capital and technology। ठीक, फर्क मेनली किसमें है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी में। So it uses lesser amount of capital and technology, okay, with comparison to, okay, so it uses lesser amount of capital and technology with comparison to, okay, so it uses lesser amount of capital and technology with comparison to large scale industry। ठीक, ये
मेजर डिफरेंस है किसमें, बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यही मेजर डिफरेंस है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, व्हाट आर लार्ज स्केल। ठीक है, तो मैंने आपको और भी बहुत कुछ लिखाया था, अभी हम जस्ट शॉर्ट में सिर्फ रिवीजन पर्पस से पढ़ रहे हैं। So what are the small scale industry? It uses lesser amount of capital and technology. The small scale industry में कैपिटल इंडस्ट्री को चलाने के लिए लगने वाला पैसा लेस होता है, कम पैसा होता है। तो कम पैसे में इंडस्ट्री चालू हो जाएगी, कम टेक्नोलॉजी, लो लेवल की टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री चलती है। ठीक है, तो अब इसके उल्टा किसमें हो जाएगा बेटा, इसी के अपोजिट किसमें रहेगा, इट विल बी इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो इन केस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इन केस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, सो इट यूजेस हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विद कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गॉट इट? ठीक है, तो जब हम किसके बारे में बात करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, है ना, तो हमने स्मॉल को किससे रिप्लेस कर दिया, लार्ज से, लेसर को किससे रिप्लेस कर दिया, हायर से। ठीक है, और इधर के लार्ज को किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल से। तो ये बन गया हमारा किसके लिए, ये हमारा किसके लिए आंसर हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो व्हाट आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इट यूजेस हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विद कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गेट इट? समझ में आया? तो ये हो गया हमारा कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक, गॉट इट बच्चों? चलिए, सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक, अब साइज के बेस पर क्लासिफिकेशन इस प्रकार करेंगे। ठीक है, अब हो गया हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ओके, दैट इज द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द basis of ownership. ठीक है, so what is the classification? The classification is on the basis of ownership. Classification on the basis of ownership. ठीक है, अब ओनरशिप मतलब उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, वो इंडस्ट्री किसकी है, दैट इज व्हाट ओनरशिप। ठीक है, अभी बेटा मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको लिख दे रहा हूं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और ये सारा का सारा डेफिनेशंस आपके पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग ना। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेस पर पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ classification, I am again repeating, on the basis of ownership, on the basis of ownership, industry can be classified as private sector industry. ठीक है, अब next, so if it is private sector industry, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा,
पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना। दोनों पे एक साथ समझो। सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मीन्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की इंडस्ट्री होगी, या एक अकेला व्यक्ति नहीं तो पूरे खानदान की, बट एटलीस्ट सरकार की इंडस्ट्री नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में एक ही व्यक्ति का ओनरशिप होगा, ठीक है, या फिर उसमें शेयर होंगे, बट गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो दैट इज व्हाट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है ना। जैसे हम हमारी कंपनी की बात करें, दैट इज व्हाट अंबुजा सीमेंट। सो अंबुजा सीमेंट इज ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में क्या आ गया हमारे पास में, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। सो व्हाट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी उस पर हक किसका है? हम बोलते हैं ना ये पेन मेरा है, ये राइटिंग बोर्ड मेरा है, तो ऐसे ही मेरा है तो ये किसका है? तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। इसलिए उसको ओनरशिप, मालिकाना हक गवर्नमेंट का है, और ऑपरेटेड मतलब उस इंडस्ट्री को चला भी कौन रहा है? हु इज रनिंग द इंडस्ट्री? द गवर्नमेंट इज रनिंग द इंडस्ट्री। गॉट इट? सो दैट इज व्हाट द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये क्या हो गया? इट इज व्हाट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब जॉइंट सेक्टर मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां पर ओनरशिप और ऑपरेशन यानी इंडस्ट्री को चलाना दोनों मिलके चला रहे हैं। तो जब किसी इंडस्ट्री को प्राइवेट पीपल भी चला रहे हैं और उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का। सो व्हेन द इंडस्ट्रीज रन इन सच अ मैनर दैट द ओनरशिप एंड ऑपरेशन, ओनरशिप मतलब मालिकाना है, ऑपरेशन मतलब चलाने का तरीका, नियम, कायदे। तो जब मालिकाना हक और चलाना प्राइवेट के हाथ में भी है और गवर्नमेंट के भी, यानी दोनों की हिस्सेदारी है, दैट इट इज कॉल्ड एज व्हाट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो फिर उसको क्या कहेंगे बेटा? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। देन नेक्स्ट, so what is next? It is cooperative sector industry. It is cooperative sector industry. अब cooperative sector industry इन तीनों से अलग हट करके, ठीक है। So what is cooperative sector industry? Cooperative sector industry is owned by the producer of the raw material used in the industry. उस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले जो पीपल हैं वो ही उस इंडस्ट्री के ओनर भी होते हैं और वो ही मिलकर के उस इंडस्ट्री को रन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। सो दैट इज व्हाट द cooperative sector industry. Okay, so it is already a 45-minute class, 9:15. Okay, so we are winding up today's session here only, students. That's all. And before the final call, 8th A, ठीक है, tomorrow you will be having your
ओरल टेस्ट, आप लोगों का कल ओरल टेस्ट रहेगा, है ना? तो मैं आज सभी लोगों को कॉल करके उनके फोन नंबर कंफर्म करूंगा, और ओरल टेस्ट जो है वो वॉइस कॉल पर लूंगा, मैं सीधे फोन का कॉल लगाऊंगा। क्लियर? ठीक है, और उसके हिसाब से आई विल सेंड द शेड्यूल बाय टुडे इवनिंग और बाय टुमारो मॉर्निंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।